After getting to know that most of the e-rickshaws in the national capital don't have badges, Arvind Kejriwal has announced financial aid to all such e-rickshaws without the badge also. This financial aid is worth rupees 5,000, and this is a one-time aid that will be given by the Arvind Kejriwal government. In fact, we have been joined by Manish Kumar, who is one such e-rickshaw driver without the badge. भैया, आप बता रहे थे हमें कि बहुत सारे जो हैं ऑटो रिक्शाज और ई रिक्शाज हैं वो बैच के साथ नहीं आते, इसके बारे में ज़रा बताइए। मैडम, जो इन्होंने अपने केजरीवाल हमारे सर है सीएम मुख्यमंत्री, इन्होंने ये हमारे को जो पहले ई रिक्शा दिया था, जो हमने फर्स्ट आया था अपना 2014 के एंड में, उसमें इन्होंने ई रिक्शे का बैच दिया था छोटा सा बना के। उसके बाद जो अभी ई रिक्शा आया है ये अपना 2015 के अंदर, उसके अंदर इन्होंने ई रिक्शे का बैच नहीं दिया, केवल ई रिक्शे के अंदर डाल दिया है ई रिक्शा नंबर प्लेट, और इसके अलावा कोई इसका इशू नहीं है बैच का। और मैम, ये जो 5,000 की बात कह रहे हैं, जिसके पास बैच होएगा उसी को ही मिलेंगे। लेकिन अब भैया केजरीवाल ने कल ही अनाउंस किया है कि वो बिना बैच के सारे ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर को भी 5,000 का फाइनेंशियल एड देंगे। वो तो केजरीवाल की बहुत हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं सबके हेल्प करें। बहुत बड़ी मेहरबानी उनकी कि आपके आगे ये जो अपना ये कोरोना का ये जो चल रही है बीमारी, इसमें सारे प्रॉब्लम है। हमें किस्त भी देनी है गाड़ी की, किस्त वाला भी हमें परेशान करता है, सब कुछ है। इसलिए केजरीवाल सरकार से ये है सब लोगों को बिना बैच के ई रिक्शे का पेमेंट दी जाए प्लीज़। बिल्कुल दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। तो लॉकडाउन में आपका गुजारा कैसा रहा? 45 दिन का लॉकडाउन। मैडम, बहुत परेशानी आई है, क्या बताएं आपको। जो पुराना पैसा पड़ा था 1,000-2,000 रुपये, उसी में ही काम कर रहा है, कुछ इधर उधर से मांग के काम चला रहे हैं। उसके अलावा आज थे 100 रुपये जो गैस भर गई, उसके अलावा कोई पैसे नहीं है। केजरीवाल सरकार से यही उम्मीद है मेरी, सब लोगों की, ई रिक्शे की। आप लोगों से भी यही गुजारिश है, ई रिक्शे की पेमेंट जरूर दें और इसकी किस्त बिल्कुल माफ कराएं। That he wants the entire interest money to be waived off. Manish Kumar and all other e-rickshaw drivers have been facing a lot of inconvenience when it comes to running their e-rickshaws, and in fact we can see the brick still placed in front of his tires, which actually tells the story that his e-rickshaw has not been working since the lockdown began, and he hasn't been working any money, and he as he said that he has been running the survival, and he has been in fact doing the survival of his family of 4 with only the last saved money, which was 2,000, and again which has been exhausting. Migrants are all set to send back to their native places. Railway authorities along with local administration are making all the arrangements. Right now we are standing at Chandigarh railway station where the preparations are being done. This is the railway station from where the train will leave, who will carry the migrants from Chandigarh, just because so far almost 20,000 migrants have been registered with the administration through the website as well as the helpline number. And in fact the railway station and the administration has started making the arrangements, just because number of migrants are staying in Chandigarh. You can see the visuals, the social distancing marks have just recently been done outside the railway station so that the social distancing norm will be maintained when the labourers will sent back to their homes through the train states. And in fact police is also deployed here to guide the labourers who are visiting the railway station, since the information travelled that Home Ministry has allowed the migrant labourers to go back to their homes, but the arrangement is being done by the railway stations, by railway authorities and the local administration. Administration is still open with the online registration. Still they are receiving the online registration of the migrants, and once it being done, then only then they will decide that how many trains will leave from Chandigarh to the different states, just because there is certain shelter homes set up by the Chandigarh administration especially for the migrants, and number of migrants are staying there in the shelter homes. Preparations are being done and soon the train will arrive on this railway station and ferry the migrants to their respective states.